All right. So Radio City 91.1 FM से मैं हूँ आरजे पल्लवी and a new campaign of Bharat Serum and Vaccines Limited Infertility Management, and we are privileged to have amongst us Dr. Chaitanya Shembekar. Welcome to the show, doctor. How are you? I'm good, and you? एकदम बढ़िया से एकदम सुहाग में. All right. So हम infertility के बारे में जैसे बात करने वाले हैं. So पहले क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करेंगे. Infertility ये बहुत बढ़ती जा रही है आजकल. तो कितना कॉमन है ये और हाउ डज एज अफेक्ट फर्टिलिटी? See, infertility means inability to conceive. And if you just consider this definition, you will find that this problem is now labeled as a disease by WHO. And therefore, you have to consider it as a serious problem and you must treat this condition. As far as the incidence is concerned, it is very, very common and it is becoming more and more common these days because of various problems. So if you just look at the incidence, it is around 15 to 20%. So out of 100, almost 20 couples, they have problem of infertility. Maybe it's not a major problem, but they have a problem of infertility. जी. And as far as the age is concerned, age का तो definitely इस पे असर होता है. और मेरा as a gynecologist कैंपेन है आजकल, I have taken it as a mission, not a campaign but a mission, कि मैं कोई भी जैसे तुम्हारी जैसी लड़की मेरे हॉस्पिटल में आती है and if she, then I'll just ऐसे बोलते हैं ना कि ये सब सवाल जो सीनियर्स और बड़े लोग बुजुर्ग लोग करते हैं जो नहीं करने चाहिए, वो मैं जानबूझकर करता हूँ. कि कोई लड़की मेरे हॉस्पिटल में आती तो मैं उसको पूछता हूँ कि तुम्हारी एज कितनी है और तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है और तुम्हारा शादी के बारे में क्या क्या प्लान है. एंड दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली इरिटेटिंग टू मेनी गर्ल्स, बट आई हैव टेकन दिस एज अ मिशन टू कन्वे दिस टू ऑल माय यंग बॉयज एंड गर्ल्स who are listening to Radio City 91.1 that please marry early and have kids as early as possible. The right age of marriage for girls is 25 years and the right age of childbearing is before 30 years. So if you wish to plan one kid or if you want two kids, whatever you plan, you must complete or finish your obstetric career by the age of 30. And there is a reason behind it. उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है. वो कारण ये है कि एशियंस में और इंडियंस में इथनिसिटी का एक बहुत बड़ा रोल है. और इफ यू कंपेयर अवर ओवेरियन एज विद द ओवेरियन एज ऑफ द यूरोपियंस एंड कॉकेशियंस, द ओवेरियन एज ऑफ इंडियंस इज 6 years अहेड ऑफ यूरोपियंस. दैट मीन्स 38 years की एक यूरोपियन महिला का जितना ओवरीज फंक्शन करता है उतना ओवेरियन फंक्शन हमारे इंडिया में 32 years की महिला कर रहता है. एंड व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज देयर इज अ ड्रास्टिक फॉल इन द ओवेरियन रिजर्व आफ्टर द एज ऑफ 32 एंड very serious issue after the age of 35. So before 30 you must finish your obstetric career and you should take motherhood as a profession and you must not ignore it because it's very very important. राइट. तो सर जब हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये फैक्टर ये फीमेल फैक्टर है या मेल फैक्टर है? You have asked a very important question. See, actually what happens, Pallavi, if you just look at the male factors and the female factors, when we used to study during our college days way back in 1992, 30 years back, we were taught that the female factor is 70% and male factor is 30%. यानी 100 में से 70 लोगों में महिलाओं को प्रॉब्लम रहते हैं और 30% में पुरुषों को प्रॉब्लम रहते हैं. एंड नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट. सी द चेंजिंग ट्रेंड. Now the incidence of male infertility has gone up to 60%. So फीमेल में प्रॉब्लम रहे या ना रहे, मेल में प्रॉब्लम जरूर रहता है. एंड दिस इज अगेन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस
we should keep this in mind, or especially in male dominated society like Indian society, there is a perception that बच्चे नहीं होना ये महिला का प्रॉब्लम है, ये लड़की का प्रॉब्लम है, या ये हमारे बहू का प्रॉब्लम है, हमारे बेटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं है. लड़कों में भी उतना ही प्रॉब्लम है, इनफैक्ट ज़्यादा प्रॉब्लम है. एंड 60% ऑफ द बॉयज हैव प्रॉब्लम्स एंड 50 to 60% ऑफ द गर्ल्स हैव प्रॉब्लम्स. राइट. दैट्स कौन द सी बात करती है सर इस चीज पर, एक किस वजह से ये होता है? वजह तो काफ़ी है, वजह तो काफ़ी है. और यदि हम लोग मोटा मोटी इसको डिवाइड किया जाए, तो जैसे मैंने आपको बोला मेल फैक्टर एंड फीमेल फैक्टर. तो मेल में लो स्पर्म काउंट इज द मेजर कॉज, एंड लो स्पर्म काउंट, as I told you, the rising incidence of male infertility is because of the changing lifestyle. Or यदि if you are a smoker or you are a chronic alcoholic, if you are not doing proper exercise and your lifestyle is not good, then the chance of reduced sperm count as a cause of infertility is very high. Similarly, in girls, there are many factors, but the major factors you can divide into three types. One is where the ovulation is not taking place, that means the ovaries are not functioning properly. Second is probably the tubes, which are actually responsible for implantation. The embryo is formed in the tube and then it goes into the uterus, are blocked, or maybe the cavity or the lining of the endometrium is not good, where the embryo ultimately gets attached. So these are the three major factors in females. But similar to male factors, females also have stress and anxiety as an important factor, and lifestyle do play a role in female factors as well. Like obesity. If you just look at the obesity and infertility, they have a direct correlation. The obesity has a direct impact on fertility, and therefore you must tell everybody in the society that please, you have to maintain your weight and your BMI should be around 22 to 23, not more than 25 in any case. ऑल राइट. तो सर इस चीज में हमने आईवीएफ का नाम सुना है, तो आईवीएफ ये क्या है और ये जो प्रोसीजर है कितना टाइम टेकिंग है ये? राइट. IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. पहले इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते थे, आजकल अभी भी काफ़ी लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं. और किसी किसी को ऐसा लगता है कि 9 महीने ये बच्चा टेस्ट ट्यूब में रहता है और फिर वो खट करके बाहर आता है. ऐसा कुछ नहीं है. टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF का मतलब है कि we form the embryos outside the uterus or outside the body of a female, and the embryo which is formed is implanted or transferred inside the uterus on day 3 or day 5 depending on the situation. So we try to develop the embryo in the laboratory and then we transfer that embryo inside the uterus. So that is what exactly is IVF or in vitro fertilization. Initially, if you just look at the history of IVF, it is very interesting. In 1978, 25th July, the first IVF baby, Louis Brown, was born. And Patrick and Steptoe and Edward is the name of the two scientists. They together worked on this IVF, and the first baby, Louis Brown, was born in 1978. And that time, the indication for which IVF was done was tubal block. Okay. So that was the first indication, because obviously if the tubes are blocked, then you cannot conceive. But Right. now, as with the advancement in the procedure and with the advances in the science and technology, the spectrum or the indications of IVF are varied. You can do IVF in any condition, be it male infertility, be it polycystic ovaries, or maybe anovulation or diminished ovarian reserve. So many indications. So it's a wide spectrum. Not only that, you can do IVF even in unexplained infertility, where you just don't know the cause of infertility. You don't know Right. what is the cause of infertility, but there is a infertility which we call it unexplained infertility, and in that condition also you may go for IVF. Okay. But there is some protocol or guidelines which you have to follow. किसी
इफ कोई लड़की आती है 25 साल की या 23 साल की और उसको शादी को 6 महीने हुए हैं और बाकी सब कुछ चंगा सब ठीक चल रहा है, तो उसका हम लोग आईवीएफ नहीं करेंगे। तो जी आईवीएफ किसका करना है, इसके इंडिकेशंस, उसके सारे एनालिसिस करके ही उसका डिसीजन लेना पड़ता है। जी। तो सर ये जो आईवीएफ प्रोसेस के बारे में हमने बात करी है, तो क्या ये पेनफुल है? Absolutely no. ओके। IVF is not at all a painful procedure. There are many myths as far as IVF is concerned. Some people think that IVF is painful procedure. Some people feel that you have to take many injections. Some people feel that not only that, some people they think that your sperms are not used, your eggs are not used, but actually this is all a myth. You we ओके। do IVF depending on the situation or indications. And in IVF, if I try to tell you shortly what is IVF, we give injections which are around 10 or 11 days of injections. Every day she has to take injections, but then these injections are not very painful. And at the end of these injections, we do ovum pickup, where with the help of a small needle, we retrieve the oocytes or the eggs from the हाँ। ovary of a female or a patient. And this procedure is done under anesthesia. So only once throughout the procedure anesthesia is required, and it's a small procedure. It's not a major surgery, it's a minor procedure. And once the eggs are retrieved, then we collect the semen sample of the husband and we form the embryo in the laboratory, and this embryo is later on transferred inside the uterus. This process of transfer does not require anesthesia, so anesthesia is required only once. And the ओके। procedure is not lengthy, but it takes around a month or so, uh, ओके। maybe 1.5 months, depending on the situation. But around 1 month is what is the time required for the procedure. हम्म। कई सारे लोग हैं सर जिनको ऐसा लगता है कि इसके साइड इफेक्ट्स भी कई सारे हो सकते हैं, या फिर जिनको डर है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई साइड इफेक्ट्स हैं इनके, इसके आईवीएफ के? आपके रेडियो सिटी के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को यही बताना चाहूंगा कि आईवीएफ के साइड इफेक्ट्स है, लेकिन दिन ब दिन वो कम होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट आईवीएफ का था ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, हम्म। OHSS, जिसमें कि ओवरीज बहुत स्टिमुलेट होने की वजह से बड़ी हो जाती थी और पेट में पानी पानी जमा होता है। But with the advancement in the technology, we what we do is we many times if we find that ovaries are big in size and there is some fluid inside, we do not transfer the embryos in the same sitting, but ओके। we transfer the embryos after 1 or 2 months in the next cycle. This is called as cycle segmentation, and this is the freezing policy of freezing embryos, where we freeze the embryos, and these embryos which are frozen are later on transferred inside the womb or the uterus of a lady. ओके। Now, this segmentation actually देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस, कोई डर नहीं है ओएचएस होने का, यदि आप साइकिल सेगमेंटेशन करो तो। और हम ओके। लोग आजकल साइकिल सेगमेंटेशन करने लगे हैं और ओएचएस फ्री क्लिनिक आजकल हमारे यहाँ दिखाई देता है। ओएचएस ऑलमोस्ट बंद हो गया है। दूसरा साइड इफेक्ट आईवीएफ का है मल्टीपल प्रेगनेंसीज, और कभी कभी ट्रिपलेट्स भी होते हैं, ओह। और वो नहीं होने चाहिए। इसलिए अभी ट्रेंड ऐसा आ रहा है कि 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर करो, या हो सके तो एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करो। तो ओके। सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्योंकि पहले तो मुझे याद है जब मैंने 15-16 साल पहले, 17 साल पहले आईवीएफ शुरू किया था, जी। तो उस वक्त हम ऐसा ट्रेंड था कि 4 एम्ब्रियोज भी डालते थे कुछ लोग। अच्छा। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों के समझ में आया कि ये बराबर बात नहीं है, क्योंकि उससे एम्ब्रियोज ज़्यादा डालने से मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ट्विंस और ट्रिपलेट ज़्यादा होते हैं। तो आजकल 2 एम्ब्रियोज, कभी कभी 3, उससे ऊपर कोई डालता नहीं, तो उससे मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस भी कम हो गए हैं। जी। तो सर जैसे हमने एम्ब्रियो के बारे में बात करी, तो ये एम्ब्रियो फिर एग्स और स्पर्म्स ये कहाँ स्टोर किए जाते हैं, और कितने टाइम तक मतलब इसको यूज किया जा सकता है, और क्या ये अच्छा है स्टोर करना? हाँ, ये सवाल बहुत
अहम और महत्वपूर्ण है। जी जैसा कि मैंने बताया कि फ्रीजिंग करना ये तो अभी आजकल आम बात हो गई है। जी लोग ऑलमोस्ट मतलब 90% केसेस में हम लोग फ्रीजिंग ही करते हैं, ट्रांसफर बहुत कम फ्रेश करते हैं। तो ओके फ्रीजिंग करना तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट उसमें रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। जी अब रही बात कितने दिन तक आप फ्रीज करके रख सकते हो, तो तुम 1000 साल तक भी रख सकते हो, 2000 साल तक भी फ्रीज करके रख सकते हो, क्योंकि वो -196 डिग्रीज में लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। जी बट if you just look at the law says that you can store or you're supposed to store the embryos for 10 years. So अब उसमें देखो, इसमें इसकी खास बात यह है कि जैसे अभी मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो काफ़ी पेशेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनका पहला बच्चा आईवीएफ से 5 साल पहले हुआ था, 2017 में या 2015 में हुआ था, एंड द सेम कपल comes to us for the second baby with the embryos which are already stored 7 years back or 5 years back. So that's the beauty of IVF. The embryos are stored and there is a container, and this is called as cryocan. हम्म, And there is a room called as cryo room where we keep the cryocans, and in those cryocans the embryos are stored. Now you are asking about the storage or freezing of embryos and sperms and oocytes. So I would like to add one more point here, that sperms are also stored, because sometimes you may require donor sperms also, and sometimes you may suppose the husband is working in navy, or suppose he is in army and he will not be able to come at the time of IVF, then you can definitely store his sperms in the cryocan. And there is one more situation, that is oocyte or eggs freezing. Now, which is the situation where you may have to freeze oocytes? The situations are very typical, and these situations or these conditions are nowadays rising day by day. आप इमेजिन करो कि कोई लड़की है जो 32 साल की, और उस लड़की को करियर करना है, हम्म, शादी के बारे में उसके मन में विचार भी नहीं है। उसके हम्म, पेरेंट्स बोलते हैं बेटा शादी कर ले, वो बोलती नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माय वर्क, आई एम फोकसिंग ऑन माय करियर, एंड हाँ, अब मुझे शादी के लिए टाइम नहीं है, नो टाइम फॉर लव। राइट ऐसा आजकल बहुत होने लगा है। जी और बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में you can, and we do this quite often nowadays, you can freeze the oocytes, and these frozen oocytes can later on be used once she gets married, maybe after 2 3 years or 5 years. She may find a suitable match, she may marry, and then she can conceive with the oocytes which are already frozen. Now why this there is a requirement of freezing of oocytes? हम्म, Because age is an important factor. We have discussed initially. As the age advances, the ovarian reserve goes down, and हम्म, therefore it is very important कि सही समय पे, सही वक्त पे, सही निर्णय लिया जाए, ताकि बिल्कुल देर ना हो जाए। बिल्कुल सर दिस इज लाइक ये जो आपने इंफॉर्मेशन बताई है इनफर्टिलिटी के बारे में लाइक आई आई होप जितने भी लोग सुन रहे हैं उनकी जो भी मिथ्स थे दिमाग में और आईवीएफ के बारे में जो वो सोचते थे तो ये सारी चीजें क्लियर हुई ऑल राइट थैंक यू सो मच सर एंड हैव Just thankful. अ Thank you. थैंक यू चलो बाय बाय। ऑल राइट सर बाय 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 बाय।